So, Arun, with environment for 1,28,000, this is question number 7. Which was the poisonous gas that leaked from the Union Carbide plant and caused the unfortunate Bhopal gas tragedy of 1984? Bhopal gas tragedy, extremely unfortunate event, the residual effects of which are still felt in Bhopal and surrounding regions. And this was most definitely caused by a leakage of the methyl isocyanate gas. The confidence in the captain here is good for the answer, but the overconfidence in the industry was not good for Bhopal. Your answer is right, and thank you for helping us spread awareness through this question. The major has us completely awestruck because he has now reached question 8, which is worth 2,56,000 rupees. And in his gold tier, the last creator left is Nidhi, who will ask you that question on health and fitness. Nidhi, first, I must tell you, you are suitably dressed for this finale. You are looking absolutely exquisite. Thank you so much. I am feeling a little overdressed, but I will still take the compliment. Thank you. You're giving us goals. You give us fitness goals, fashion goals, glowing goals. You're giving us all sorts of goals. Thank you so much. So, Major Saab, abhi tak aap bahut phenomenally khel rahe hain. There's one common thing we both have. My father also retired from the AMC. So, wonderful. Oh, wow. AMC that too. Wonderful. You've been doing a phenomenal job in the quiz also and offline also with COVID and of course being in the army. But is there anything you would like to tell me about your fitness regime or what's been up in the last 1 year? So जब मैं आर्मी में होता था तो हर दिन सुबह I was posted to the northeast. So winters में सुबह सुबह उठ के 5 बजे जाके PT करना पड़ता था and my unit was on top of a hill in a jungle. So we had to run down the hill and then up the hill. So that's how tough, that's how strict my fitness regime used to be once upon a time. I used to play about 3 to 4 hours of badminton every day following this in the evenings. I used to be extremely fit while I was in the army, but afsos, after leaving the army, I basically am a very lazy person. So my resolution is at least by the end of the pandemic, I should be getting back into shape to what I was while I was in the army. So कोशिश मैं ज़रूर करूँगा. चलिए क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड पूछते हैं, वेट लॉस से रिलेटेड पूछते हैं एंड ऑल्सो आई एम श्योर यू नो दैट इट्स ऑल्सो लॉट टू डू विद द डाइट ऑल्सो. एक्सरसाइज एक अपना पार्ट है लेकिन डाइट का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. सो जब हम वेट लॉस और डाइटिंग की बात करते हैं तो एक्चुअली उसमें भी बहुत सारा साइंस होता है. Take glycemic index for example. Glycemic index is a system where you assign a number to a carbohydrate containing food according to how quickly it increases your blood sugar. So, उसी से related मेरा ये question है आपसे. The glycemic index of which of these fruits is the lowest? आपके options हैं A. watermelon, B. apple, C. mango और D. pineapple. तो ऑप्शन ए तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वाटरमेलन डेफिनेटली हैज अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. मैंगो अगेन इज वेरी स्वीट एंड शुड हैव अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. सो इट शुड बी बिटवीन एप्पल एंड पाइनएप्पल इफ यू आस्क मी. Out of the two, if I need to pick one, I may not really be very confident. आपके पास 2 assist अभी available हैं. There is share a clue जिसमें निधि आपको एक clue देंगी and hopefully that will make your selection easier. And then of course let's change the question. If you get this right, you go to 2,56,000. If you get it wrong, you come down to 64,000. So think carefully and choose what you'd like to do. Play an assist or give us an answer. I think I'll use an assist here.
तो कौन सा assist आप लेना चाहेंगे? Do you want a clue from Nidhi, which makes it easier, or do you want this question to be red carded? अगर मैं ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया तो देयर इज नो गारंटी कि अगला क्वेश्चन आसान मिलेगा, मगर इस क्वेश्चन के बारे में मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आइडिया है, तो आई थिंक आई विल पिक द असिस्ट, यूज अ क्लू. Okay, so Nidhi, could I request you to please share a clue with Chandrakant? So चंद्रकांत, आपका क्लू है ये फ्रूट डॉक्टरों को दूर रखता है. Thank you so very much, Nidhi, for that clue. I don't think I could have asked for a better clue to a question like this. Purely on the basis of this clue from Nidhi, I should go with apple because an apple a day keeps the doctor away. Kindly select option B, apple. Option B, apple. And Nidhi, well, it seems like after your clue, we can't keep this doctor away from 2,56,000. We can't keep this doctor away from the diamond tier. Could you confirm that for us, please? Absolutely, we can't keep this doctor away. It is the right answer. Congratulations. Thank you so much. So basically, glycemic index is a tool जिससे फूड्स में ब्लड शुगर लेवल कितना इफेक्ट होता है उसके ऊपर एक रैंकिंग होती है. ये 0 से लेके 100 तक स्केल में है. 0 रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन योर ब्लड शुगर एंड 100 रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम, और ये आप प्योर शुगर या ग्लूकोज को देते हो. तो डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए यूजुअली इट्स प्रेफर्ड दैट दे हैव लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स. इनमें जो ऑप्शंस थे उसमें वाटरमेलन जो था दैट इज टिपिकली somewhere between 70 to 74 and it's considered high GI. हालांकि उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, तो दैट इज व्हाई यू वुड सी दैट पीपल डू कंज्यूम वाटरमेलन. और जो बाकी के ऑप्शंस है उसमें एप्पल जो है वो रिलेटिवली लोएस्ट है ऑन द स्केल व्हिच इज बिटवीन 30 to 34, मीनिंग दैट इट डजंट गिव यू अ स्पाइक इन योर ब्लड शुगर. और बाकी दो ऑप्शंस थे मैंगो दैट इज बिटवीन 50 to 55 एंड पाइनएप्पल 55 to 67, so pretty close. Wow, so pineapple is higher than mango. I did not know that. Wow, that is amazing. That's a good thing to learn. Thank you so much, Nidhi. And of course, Chandrakant will also say thank you to you because that clue really simplified things for him. You have 2,56,000, which means you only have 2 questions left in the grand finale of this season of You versus YouTube. ये जो मेजर डॉक्टर क्विजर जो हैं, ये दिखा रहे हैं अपने सारे रंग यहाँ पर, और रंग तो हमारे प्लेयर्स भी दिखा रहे हैं. तो देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या हाल है, how everyone else is doing. Rahul, Harish, Ashwin and Anushka. Let's have a look at the leader board. There is Harish and Ashwin has caught up with him. They are both now on 7. Rahul's at 5 and Anushka's at 3. Harish, which one did you get wrong? Because you were going max to max in the silver tier. कौन सा गलत हुआ? It was the most recent question about the glycemic index, which I think only makes sense because fitness has never been a priority for me and I wouldn't know anything about what is good or not good to eat in terms of health. I'm very knowledgeable in terms of what is good and not good to eat in terms of taste. But yeah, I think it just makes sense that the fitness question was where I tripped up. Ashwin and Harish are both tied, but right now we're back to Chandrakant, who is now standing at the door of the diamond tier, and let's see who are the 2 YouTube creators there to receive you. We've got Gaurav Garg with general knowledge, we've got Roshni with science. तो ये दोनों क्रिएटर्स आपका इंतजार कर रहे हैं. आई डोंट थिंक दोनों में आपको कुछ समस्या होनी चाहिए, क्योंकि आप क्विजर हैं तो जनरल नॉलेज इज योर प्लेग्राउंड, और आप डॉक्टर हैं तो साइंस इज ऑल्सो योर प्लेग्राउंड. So you must be quite relieved to see these 2 topics. I would call both of them equally tough than equally easy. Nice. Expectation management is what this is called, what Chandrakant is doing right now. Expectation management. I just hope that the general knowledge question is from the 0.01 that you claim to know about things that have happened in the world. So you have to tell us that who will ask you question 9 and who will ask you question 10. तो पहला सवाल कौन पूछेगा आपसे? I've been a science student my entire life. Picked science in class 12th. Did a professional course which is science.
But I think I'm inclined to go with general knowledge as my question number 9. Primarily because I think I'll be more comfortable answering a general question than a science question at this stage. गौरव, ये तो गुड़गांव में गाड़ी चला रहा है, अभी लग रहा था साइंस की तरफ जाएगा और लास्ट मिनट ऐसे जीके की तरफ टर्न करके. ये लेकिन आई होप कि डिवाइडर हिट ना करें जैसे यहाँ पर होते हैं. That's right. Let's hope that you do not turn his car turtle with this question. It's question number 9 for 5,12,000 rupees. Over to you, Gigi. So चंद्रकांत, मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि आप गोल्ड टियर तो क्रॉस करेंगे ही. बाय द वे, वेरी सून आई एम कमिंग टू केरला, मे बी नेक्स्ट मंथ. जरूर निलंबुर आ जाइएगा, जरूर घर पे भी आ जाइएगा. आई विल बी हैप्पी टू टेक केयर ऑफ. वो अपने रोल्स रॉयस के लिए इंटीरियर्स ढूंढने आ रहे हैं, तो ले जाना उनको टीक ट्रीज के पास. 100%. रोल्स रॉयस गौरव चौधरी के पास है, मैं उनकी किराए पे ले लूंगा. व्हाई शुड आई स्पेंड मनी? ये भी सही बात है भाई. ये हुआ ना असली जनरल नॉलेज. ओके, सो चंद्रकांत, ऐसे कई जानवर हैं जिन्हें पुलिस या आर्मी की तरफ से अलग अलग चीजों के लिए ट्रेन किया जाता है. सो मेरा आपसे सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ क्रीचर इज मगावा, who was awarded a gold medal for his heroism and had recently retired from his job of detecting landmines in Cambodia? And your options are: A, is it a rabbit, B, a dog, C, a cat, and D, a rat. मैंने ये तो सुना तो जरूर है कि rats are used to detect landmines. डॉग तो नहीं हो सकता क्योंकि डॉग का वेट ज्यादा है and it can trigger a landmine. Cats are difficult to train for a purpose like this. But rabbit again is a possibility. वेट ज्यादा नहीं है. A rabbit can also detect landmines and defuse them. So मेरा शक है between rabbit and rat. My intuition says it has to be rat. But I think the stakes are a little too high at this point to go with rat as a short guess. If you feel your instinct is guiding you, if you feel like you're sure, you can save your assist for the last question and give us the answer. The answer could be right, which means your money doubles to 512. If it's wrong, of course, it halves to 128. Your other option, of course, is that you can quit the game where you are with 2,56,000 and walk away. तो ये हैं आपके सारे ऑप्शंस. तो आप क्या करना चाहेंगे? आपका इंस्टिंक्ट जो कह रहा है उसके साथ जाएंगे, या तो श्योर नहीं असिस्ट यूज करेंगे, या गेम छोड़ के जाएंगे? I think I'll use my third assist here. Okay, so your assist is change the question. तो जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन बाहर करते हैं और नया क्वेश्चन लाते हैं, पर उसके पहले अगर आपका इंस्टिंक्ट कह रहा था रैट, तो इसको ग्रे करते हैं, एक बारी चेक करते हैं एंड हमारे क्रिएटर्स के साथ भी चेक करते हैं कौन है इनके साथ. who's saying rat? Who's saying rat? We got technical Guruji saying rat, Sucharita's with rat, Arun's with rat. Oh my god, सारे हाथी खड़े हो गए, सभी रैट के साथ हैं. It's the year of the rat, it seems. Well, Chandrakant, everybody is agreeing with your instinct. Now let's see if everybody's collective instinct is correct. Chandrakant, the way you always analyze a question and you always come to a decision after that is something that we can all emulate, and rat is the right answer. Rat would have been the right answer. So इसके बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि 5 साल के करियर में मगावा ने कंबोडिया में 71 लैंड माइंस और बहुत सारे अनएक्सप्लोर्डेड आइटम्स को स्निफ आउट किया है. मगावा इतना छोटा और हल्का है, इसका वजन सिर्फ 1.2 kg है और 70 सेंटीमीटर लंबा ये चूहा है. एंड इट डज नॉट ट्रिगर माइंस, ही वॉक्स ओवर देम एंड ही सेव्स लाइव्स. इनफैक्ट लास्ट सितंबर मगावा को PDSA गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया था for his life-saving devotion to duty. But you know the stakes were very high and maybe you have just made the right decision. Yeah, I don't actually question Chandrakant's strategy at all because he's played this game इतनी strategy के साथ खेले हैं ये कि इन्होंने analyze कर लिया होगा कि इनका instinct कुछ कह रहा है, पर वो risk reward analysis जो ये कर रहे थे
आई थिंक कहीं पे आप श्योर नहीं थे चंद्रकांत के शायद रैबिट भी हो सकता है, शायद खरगोश भी हो सकता है, राइट? Precisely why I thought I should not risk it. So he didn't. Could have been right, but could have, would have, should have. तो कुछ नहीं होता. Hindsight is 2020. अभी है नया question number 9 for 5,12,000 rupees. Gaurav, if you could do the honors, please. So Chandrakant, you opted out of rat race. I must commend you for that. There are a number of bravery awards given to people from the Indian military. So मुझे अब ये जानना है आपसे, Major Somnath Sharma, he was the first recipient of which Indian Bravery Award? And your options are A. Paramveer Chakra, B. Ashok Chakra, C. Mahavir Chakra, and D. Kirti Chakra. It's not B. Ashok Chakra. It's not D. Kirti Chakra. Both are given out during for gallantry during peacetime. But Major Somnath Sharma, who was an officer in the Kumaon Regiment, he was the recipient of the first ever Paramveer Chakra awarded more than 75 years ago. I think there are 21 Paramveer Chakra awardees till date, if I'm not mistaken. And I'm fairly certain Major Somnath Sharma was the first ever recipient of the Paramveer Chakra. You can kindly select option A, Paramveer Chakra. A, परमवीर चक्र सिलेक्ट किया उन्होंने. अगर इस सवाल का जवाब सही निकला तो वो 10वें सवाल तक जाएंगे जो 10 लाख रुपए का है. गौरव, प्लीज टेल अस. Chandrakant, I think when you can tell me the name of the regiment he belonged to, I don't think there is any room for suspicion. Yes, it was Major Somnath Sharma who won the Paramveer Chakra, the first recipient. Amazing, very well done. Thank you so much. I think in hindsight, that was the right decision to flip a question. Absolutely the right decision because it has worked for you. तो भाई गर्ग साहब जरा और बताइए हमें प्लीज, बिकॉज नहीं तो चंद्रकांत ही बता देंगे. उनको पता है सब कुछ. मुझे कोई शक नहीं है. चंद्रकांत can speak about it at length, but I'll do still my job and apprise about other information. So Major Somnath Sharma, he belonged to 4th Kumaon Regiment, and as you know, Paramveer Chakra is the highest gallantry award given during a wartime. And the last recipient of Paramveer Chakra was, of course, Captain Vikram Batra. And Chandrakant, I see that same spirit in you, and I'm sure आपका दिल wants more now, which is obviously the grand prize. And I'm very happy to propel you towards the last question. Amazing, very, very well done. Thank you so very much, Gaurav. Thank you so very much. अभी बताइए हमें, क्या आप नर्वस हैं कि कॉन्फिडेंट हैं इस लास्ट क्वेश्चन में जाते हुए? 10 लाख रुपए का ये सवाल है. यू वर्सेस यूट्यूब के चैंपियन बन सकते हैं आप. ऑल्सो एज यू आर अवेयर दैट व्हाटएवर मनी यू अर्न टुडे, वी विल बी डोनेटिंग द एग्जैक्ट सेम सम to Give India, which is fighting and battling for the COVID relief effort in India. So obviously it is a very noble cause, a cause that is bigger than all of us. तो अभी जब आप इसके चौखट पे खड़े हैं तो क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में? जैसे आपने बोला कि I think the most important priority here is public good. I would try to get to the jackpot so that more people would benefit from the same amount given out to them. Season finale hai. The final question that we're going to be asking on this season definitely is going for the grand prize. It is really nicely and sweetly poised, and we have developed this thing in this season, Chandrakant, which we are all going to give you. All 11 of us are going to give you some good luck with our good luck pose. Ready? Ready, everyone? 1, 2, 3, go! Let's go! अरे रचना साइड पे यार, मुक्का नहीं मार रहे उसको हम. ऐसे? Oh, lovely. Excellent. Well, I just hope that you can take this that we gave you and do this that Rachna gave to the question and then knock out that grand prize of 10,24,000 rupees. Are you ready, Chandrakant? Yes, I am. Chandrakant,
Chandrakan. Come on. Here is question number 10. For 10,24,000 rupees, here is Roshni ma'am with science. So चंद्रकांत जी, जितने नर्वस आप हैं शायद उतनी ही नर्वस मैं भी हूँ ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज ग्रैंड फिनाले डे का ग्रैंड प्राइज वाला क्वेश्चन है, एंड दैट टू समबडी लाइक यू हु हिमसेल्फ इज सच अ ह्यूज इंस्पिरेशन. तो मैं दिल से चाहूंगी कि इस सवाल का आप बिल्कुल सही जवाब दें और आज यहाँ से आप ग्रैंड प्राइज जीत कर जाए. So Nobel Prizes, जैसा कि हम सभी को पता है, have been a source of honor and recognition across many fields since 1901. So my question to you is, the 2020 Nobel Prize for Medicine was awarded to Harvey J. Alter, Charles M. Rice, and Michael Houghton for the discovery of which virus? Your options are option A, Ebola, option B, COVID-19, option C, hepatitis C, and option D, chikungunya. It's definitely not COVID-19 because it's a new virus. It cannot be chikungunya. I don't think it wreaks the kind of havoc for which a Nobel Prize could be awarded. It can most definitely be Ebola, but I have a very vague memory of reading that this was the hepatitis C virus. If my memory serves me right, it is hepatitis C and not Ebola. I think you can select hepatitis C. Think, or are you sure that I can select it? Think or sure? I'll select hepatitis C. अब आया ना without the word think. So अब आपने for sure कह रहे हैं select करें hepatitis C. Is that correct? C, hepatitis C. That's correct, yes. Yes? Okay, there are no assists left Yes. for Chandrakant. He has to choose an answer. The answer, if it's correct, will make him the champion, which will be a great way to end this season of You versus YouTube. If the answer is wrong, he goes down to 2,56,000, but still walks away with a lot of respect from all of us. You can tell people have their fingers crossed for you. They're all wanting you I to have win. my fingers crossed. Tell the nervousness that's happening. You can see Sucharita, Reena, Seema, Rachna. Gaurav Garg is extremely nervous for you. I think he's also rooting for you. You can tell Ganesh, Arun, all of them. Me as well. Okay. 10,24,000 rupees, and to be the champion of You versus YouTube, it is Dr. Major Chandrakant, retired of course, but not retired from quizzing. Can he be a stalwart of this show? Roshni ma'am, आप भी nervous हैं? आप भी चाहती हैं कि ये सही जवाब हो ना? So actually speaking, चंद्रकांत जी, मेरे साथ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हुई इस पूरे शो के दौरान. जब मैं डायमंड टियर पे बैठी, मेरे सवाल का सही जवाब किसी भी चैलेंजर ने नहीं दिया, और हमेशा मतलब दिस इज सो अनफॉर्चुनेट फॉर मी कि हमेशा मुझे इतनी दूर तक आए हुए चैलेंजर को ये बोलना पड़ा कि आपका जवाब गलत है, और वो आगे नहीं बढ़ पाए. तो मतलब इनफैक्ट आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट इट एंड सो अनफॉर्चुनेट अबाउट दिस. सो दिस बीइंग द ग्रैंड फिनाले एंड द ग्रैंड प्राइज क्वेश्चन अगेन, आई रियली वांटेड कि इस बार आपका आंसर सही हो, और आपने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है. दैट्स द राइट आंसर. Yes! Well done. We have a champion in the season finale of You versus YouTube. We have Major Dr. Chandrakant, who's won 10,24,000 rupees. Woohoo!
I want to thank Rahul, Harish, Ashwin, and Anushka. Thank you so much. And also, thank you so much for genuinely cheering on Major Chandrakant. We could feel the good vibes coming from the player pool. So thank you to all of you. Thank you very much. But this is about you, Chandrakant. मैंने कहा था, Chandra can, and he did. Jeez, my friend, how are you feeling? 10,24,000 rupees. Quite the ride. I mean, just can't believe that this has actually happened. तो कभी-कभी होता है ना, देखिए, मेरिट तो है, टैलेंट तो है, किसी दिन जो बैट्समैन है ना, थोड़ा ज्यादा फॉर्म में होता है. And I want to tell you that we will also be donating 10,24,000 rupees to give India for their COVID relief efforts. So you have done well, not just for yourself, but you have done well for them as well. So Chandrakant, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 4 चांद लगा दिए यहाँ पे. तो आपके लिए एक बार फिर salute and tali. Big round of applause for Chandrakant for doing so well. From all of us, respect, brother, respect. So Chandrakant is of course on his way with 10,24,000 rupees, but I don't want all our YouTube creators, all our superstars to be on their way, क्योंकि आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल सरप्राइज है. रणवीर भाई, आपसे शुरू करते हैं. आपके लिए मैं एक स्पेशल यंत्र लाया हूं प्याज काटने के लिए, जो आपको आंसू नहीं आएंगे. ये तलवार, ये स्पेशल तलवार मैं आपके लिए लेके आया हूं. इसमें एक आंख भी है, क्योंकि इस आंख से मैं हमेशा आपको देखता रहूंगा जब आप प्याज काटेंगे. और ये जो ऑर्नेट वर्क है हैंडल पे, इसको भी देखिए. ये आप, क्योंकि आप स्टार हैं, दैट्स वन. और ये दूसरा वाला जो है वो आप किसी को भी दे सकते हैं. बस आई डोंट वांट टू ब्रेक डाउन ऑन द कैमरा. मैं रो पड़ूंगा. इतना प्यार मत दो, इतने सारे स्टार. लिसन, आई हैव समथिंग फॉर यू टू, गौरव. एंड दिस इज वन ऑफ माय सिग्नेचर पेपर मिल्स. And it's actually a proper, हाँ. और ये जो है, ये actually आपके घर पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो. तो ये भी actually आपके घर पहुंच रहा है, by the way. ये 2 किलो प्याज के साथ. निधि, आप कह रही थी कि आप केक वगैरह नहीं खाती, तो मैंने आपके लिए स्पेशल ये ब्रोकली केक बनवाया. देखिए, ये सच में. और ये मजाक नहीं है, ये सचमुच ब्रोकली केक है. ये काटा मैंने, और अंदर आप देखो, सचमुच ये सचमुच ब्रोकली का केक है. It's actually this is green color की this is broccoli cream, and it looks amazing, but it tastes horrible, right? Thank you. टेस्ट नहीं है, पर प्यार बहुत है इसमें. Anything that tastes horrible, उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डाल दो. जो करे माँ ना पियो, वो करे देसी घी. अरे वाह, क्या बात बोली आप. सीमा जी, Yes, आपकी अंग्रेजी तो बहुत ही सुंदर है, पर आपकी हिंदी माशाल्लाह, वाह. तो आपके लिए हिंदी में वार्तालाप. ठीक क्या है. बात है. एक स्पेशल किताब है जो इनफैक्ट मैंने कल रात अपने हाथों से लिखी है. So the next time you come here, you promise to me that you will say this word correctly. भैया. Say. भैया. गणेश आपको बुला रही हैं, बात करिए ना उनसे. I thought I said it very well. Yeah, don't let GK bully you. Let me bully you a little bit. Just I can't wait to read that Hindi book. I'll read it for sure. रचना जी, हाँ जी. आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ, देखेंगी क्या? रुकिए, थोड़ा वाइड शॉट में लीजिएगा, थोड़ा दूर से फेंकूंगा. ये लीजिए. 10,000 सोने की अशरफियां. क्या बात है. वाह 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 वाह. I would have given you real gold, but because you're so sweet, I felt like we should give you gold coin chocolate. तो ये आपके लिए मेरी तरफ से, इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिएगा. ठीक है? Thank you. Thank you. Whatever you earn after investing this, I don't want it back in this. I want it back in Bitcoin. Thank you very much. Kind regards. Okay, अब टेक्निकल गुरुजी, आपके लिए देखिए मैं क्या लेके आया हूँ. ये है जिपलॉक बैग्स. ठीक है, और 700 जिपलॉक बैग्स. क्योंकि अगर आप कभी बारिश में अपने स्कूटर पे जा रहे हो, ठीक है, और अपने 700 फोन आपको प्रोटेक्ट करने हैं, तो उसके लिए नहीं सच्ची में ये देखिए. 700 पूरे 700 लेके आया हूँ. चीटिंग नहीं करी मैंने. ठीक है. अरे तानिया जी, आपके लिए भी मैं कुछ लेके आया.
क्योंकि आपको इतना ट्रैवल करने का शौक है, तो ये आपके लिए क्लिप ऑन खाता, क्योंकि आपको दोनों हाथ चाहिए होते हैं ना कैमरा शूट करने के लिए, तो छाते के लिए हाथ नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो सीधा ऐसे लगा लेना है इसको ऊपर, ठीक है। और वैसे मैंने आपके लिए सन ग्लासेस देखे थे, पर फिर मेरे को ये वाला ब्रांड देखा जो बहुत अच्छा था, तो मैं ये लेके आऊं आपके लिए, ठीक है। कैसे लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मक्खी की आंखें होती है, वैसी लग रही है बिल्कुल। मक्खी की। I have a few extra ones if anybody wants. किसी को चाहिए? हाथ खड़ा करो जल्दी से। एक्स्ट्रा चाहिए किसी को? रीना ने हाथ खड़ा किया अपना, तो रीना को भी मैं भेजूंगा ये। I will send for रीना। रीना, आप के जो नेल आर्ट है, तो आपका नेल आर्ट हमने बड़ा नोटिस किया है, इसलिए मैं आपके लिए ये स्टिक ऑन नेल्स लेके आया हूं। ये देखिए कैसा लग रहा है, ये है ना, है ना, काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगली बार मैं चाहती हूँ कि वो आप पहने और मैं ये पहनूं, और फिर हम ना थोड़ा सा ट्विनिंग करें ऐसे ऐसे। मेरे को ये लगाने की जरूरत नहीं है, फुल मून नाइट होने तो खुद ही हो जाता मेरा ऐसे। ओ सुचारिता, मैं सोच रहा था कि आपको अब अगले अपने चैनल पे एक वीडियो बनाना चाहिए जो बिल्कुल आपको कोई यशराज का गाना और उससे आपके बाल उड़ रहे हो, पर आपके लिए मैं ये स्पेशल फैन लेके आया हूँ। करो करो, देखो कैसे, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, वाह वाह, व्हाट अ टेक्नोलॉजी। वर्चुअली भी बाल लौट है उनके। गौरव चौधरी बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में उनको कैसे नहीं पता। Thank you. I would like to thank YouTube for giving me a role of a lifetime, for trusting me with this part, and for letting me, tell Gaurav when his terrible mimicry is just as terrible as it is. अरे रुलाएगी क्या? सुचारिता, तो कप से याद आया, मेरे पास एक और कप है, ये है रोशनी मैम के लिए, क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा सीखा है मैंने इस सीरीज में, क्योंकि साइंस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, तो आपको ये बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जा रहा है। और देखिए मैंने आपके लिए बनवाया ये। थैंक यू गौरव। रोशनी मैम, so sweet. एक मिनट, ये पहले सहरा हटाने दो उसका जरा, एक मिनट, आप देख लो ठीक से। देख लो, ठीक है, That is so sweet. इतने सारे हैं तो मजा भी आएगा ना, एक और ऐड हो जाएगा पीछे शेल्फ में। तो ये आपके लिए ये स्पेशल ट्रॉफी। कहाँ है हमारे स्माइली फेस अरुण? I have got you a happy bobblehead. There you go. ठीक है, ये आपके लिए है, ये देखो। इनफैक्ट इट्स 2 हैं, ठीक है। It looks like him. Look at this. Yeah, one is you, one is me. One is you, one is me. So we'll do a bobblehead. Yes. करो, come on. Yeah. कुंवर साहब आप मेरे लिए क्या लाए? मैं आपको बताऊं मैं आपके लिए क्या लाया हूं। आपने जब ये सीजन शुरू किया था तो आप बिल्कुल ही पोकर फेस थे, आप इतने सीरियस थे, पर एंड तक जो है आपके अंदर के रंग बाहर आने लगे और हम समझ गए कि यू रियली आर अंदर से। Wow, that's scary. Dude. Nightmare fuel, dude. तो ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है एक, इसको मैं धुलवा के प्रॉपर्ली भिजवाऊंगा क्योंकि अब मैंने पहने, दैट इज नॉट गुड फॉर कोविड, ओके। एंड मैं बचे एंड मैं बचे, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, आई डोंट वांट इट, आई एम स्कैर्ड टू सी इट। Such a bad boy. No. Please explain. Please explain. Got it. Please माफ कर दो सारी चोरी के लिए। तो भाई देखिए
एक ऑफ कोर्स ये मैं आपके पास भेजूंगा, पर अगर आप मेरी साइकिल मेरे को वापस भेज दें तो ये भी वापस साथ में आप भेज सकते हैं, ठीक है? और चेल्सी का स्कार्फ फिर आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये अगर आपको बार्टर सिस्टम अच्छा लगे तो वी कैन डू दैट, पर अदरवाइज ये आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि ये शो अब खत्म हो चुका है, इसका सीजन फिनाले था। मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच नॉलेज विद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सो मच फन। Thank you so much for being such sports with all the silliness that I have subjected you to. So we must celebrate, and this is how we celebrate. Yay! 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 अपने घर में कचरा कर रहा हूं मैं, खुद ही साफ करना पड़ेगा। This ends the second season of You versus YouTube. Thank you, everybody. Thank you so much for so generously sharing your knowledge and your time and your love. Thanks to all of you. Thank you so much for being here. And a big thank you to all our viewers.